Good morning, students. After a long break of 4 days, we are going to start with the accounting standard questions today. We started with the accounting standard 1, that is a disclosure of accounting policy. S2 is inventory valuation. S3 cash flow statements that we already covered one chapter. Then we have seen S10 accounting. That is a property, plant and equipment. After that, effects of changes in foreign exchange rate. So 11 number. After that, government grant, and last accounting standard is borrowing cost. But today is actually the last day of our session, and then we are going to start with one chapter, which is financial statements of financial statements. Chapter number 2, in which we are going to start with the going concern concept. If not applicable, then better how to maintain the books of accounts, and if how to maintain books of accounts if there is historical cost or physical maintenance. Okay, so that question is very simple. That is a chapter number 2, and that we are going to see it on Sunday. We will need a session of 1.5 hours or 2 hours that we are going to do it on the Sunday. We will adjust one day for that. Beta, now this is the last part which I'm going to teach you. Okay, so today is a question answers day. So say good morning in the comment section, or today I will give you some exam tips also. So what you have to do in this 6 months. That is a yes, because this session is the last session, because after that beta another faculty will take over these pre-incorporation and post-incorporation chapter, and I think higher purchase you have. So the 2 chapters are remaining. So that will be taught by another faculty, and I hope you enjoyed my sessions till today. So friends, what we are going to see in today's session, first we'll finish with these module illustrations of accounting standard 12. I hope you are enjoying your remaining sessions. And now it's very important point where you have to do your homework regularly, and now beta you almost have done. So now there must be some consistency for next 4 to 5 months. Otherwise, if you don't maintain that consistency, it will be very difficult to clear your exams. And as you are aware that now CA final ka paper is also was very difficult for auditing, and CA inter ka first paper was also difficult. Beta, it's not very simple, and see those students who understand this logically will only survive in this world of CA course. And remember, so if your basics are very strong, then only you are going to pass this exam. Otherwise, it will be very difficult. कि आजकल exam में questions are also not getting repetitive questions. The tricky questions, better combination of 2 to 3 questions, better you will get it in the exam. And even I will tell you, the last paper was not very easy for intermediate course. Even law was easy, but better accounts was very difficult. Okay, so मैं यही बोलता हूँ. And costing में तो you already know कि costing में बेटा you need a lot of practice, and only practice is not important. Again, you have to develop your thinking in the costing, then only you are going to pass this exam बेटा. Otherwise costing तो बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है बच्चों को. So ये एक ही मेरा ओपिनियन है कि, और इनकम टैक्स, दैट इज द लास्ट पेपर बेटा. अभी अपना अकाउंट्स होने के बाद यू विल स्टार्ट विद योर, आई थिंक इनकम टैक्स का ही सेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके. तो यस, गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग इन द कमेंट सेक्शन बेटा. आज लास्ट डे, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा इफ यू से गुड मॉर्निंग इन द कमेंट सेक्शन. तो जल्दी से आ जाइए. नीति, यस, झांसी जी गुड मॉर्निंग सर. S10 का रिमेनिंग पोर्शन यस बेटा आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे. गुड मॉर्निंग बेटा. नवनीत जी, नितिन, सईद, गुड मॉर्निंग. जिया पटेल, गोकुल जी, देन मुनिंदर जी, मनीषा, कृतिक, जगत बाबू जी, कोमल प्रजापति. यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. बड़ा व्हाट आर एग्जाम टिप्स, तो वो मैं आपको बोलता ही रहूंगा. यस, गुड मॉर्निंग बेटा. एक केस का छोटा सा पढ़ बच गया है, सो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. इफ यू आस्क मी माय yes opinion on your exams after 2018-19, I've seen your accounts paper is not very straightforward paper. Up to 2018-19, I think paper was very simple. Papers were very simple up to 2018-19, but now papers are really very difficult बोल नहीं सकते, because these are lengthy, and this is, you are already aware कि accounts बोला तो lengthy होगा. तो paper set of ICI
यस, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो उनके हिसाब से तो ही इज वेरी राइट पर्सन कि वो बराबर कर रहे कि उनके साइड से, पर लेंदी पेपर सेट हो रहे हैं। लेंदी पेपर का रीजन एक ही है, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग ऑल दिस पेपर्स जो है वो इजीली पेपर तो नहीं रख सकते कि डेबिट क्रेडिट लिख दिया। अदरवाइज पहला ही पेपर मेंटली फिटनेस चाहिए। जैसे देखो, मेंटली इतना फिट होना चाहिए कि कभी कल के एसआरएच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की जो मैच हुई उस वैसा एकदम हो जाता है फिर, कि कभी आईसीआई के टूवर्ड्स बॉल रहेगा, कभी आपके टूवर्ड्स बॉल रहेगा, वैसा अकाउंट्स का पेपर आता है कि समझ में ही नहीं आता, और लास्ट में आपका नो बॉल हो गया तो आपका तो विकेट चला गया, फिर तो खत्म हो गया, आप लोग बेटा आप हार गए। तो वैसा करना नहीं है कि गलती, एक गलती कितनी महंगी पड़ेगी ये याद रखना। या जो कल के मैच में भी हुआ था आपने देखा होगा, तो एक नो बॉल के वजह से पूरा मैच जो राजस्थान के हाथ में आया था पूरा निकल गया। मतलब ऐसी गलती आपसे भी होती है, और वो गलती बेटा हम लोगों का 6 महीना वेस्ट कर देती है, और फिर आप लोग बोलते हो कि सीए कोर्स बहुत बेरहम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फर्स्ट थिंग कि आप लोग कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 6 मंथ तक प्रैक्टिस करो भाई, कुछ मत करो। जो रेगुलर लेक्चर्स के बाद है ना, अपने बेसिक डेबिट क्रेडिट पे बहुत स्ट्रांग रखो, और बेसिक डेबिट क्रेडिट आ गया तो ये कोर्स बहुत इजी है, इतना याद रखना अकाउंट्स में तो भी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। आज तक जो भी आई एंजॉयड अ लॉट आपके साथ, एक अच्छी बैच मेरी गई आपके साथ बेटा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को वी गॉट अ शॉर्ट टाइम, बट नेक्स्ट श्योर कि वो चैप्टर भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। यस दर्शन जी, आई विल टेल यू क्या करना है क्या नहीं करना है। Yes, so let's start with the illustration one of these accounting standard 12. First, we will finish with the accounting standard 12 and then we are going to start with the accounting standard 1. So good morning to all of you. jaldi se aa jaiye. Illustration number 1 पे. So what is the page number? Page number is 3.115. Page number is 3.115 and please start with reading beta page number 3.115 से. So what is the entry that we are going to pass? Z Limited purchase a fixed asset of rupees 50 lakhs. तो कितने का fixed asset खरीदा है? Purchase a fixed asset. So what is your starting entry beta? First entry will be fixed asset comes in, cash goes out. So bank balance reduces. So fixed asset account debit to bank account. So what is the first entry? Fixed asset account debit to bank account. Yes. So this is the beginning entry. Fixed asset account debit to bank, which has a estimated useful life of the 5 years with a salvage value of 5 lakhs. So beta यहाँ पे useful life कितनी है? 5 years. So this will help you for the depreciation. So this will help you for the depreciation calculation with a salvage value of rupees 5 lakhs. तो 5 लाख रुपए का salvage value है. On purchase of the asset, government grants rupees you 10 lakhs. तो गवर्नमेंट ने कितना ग्रांट दिया? सो बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, सो ग्रांट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, सॉरी बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years if the grant received is deducted from the value of the fixed asset. So value of fixed asset में से reduce किया तो what you are going to do? So बेटा this is the option number 1. What is this option बेटा? Option 1 is deduction from the asset. So you don't open deferred GG account. Deferred GG account आपने ओपन नहीं किया था, इतना याद रखिए. सो एंट्री विल बी वेरी इजी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट. सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट रुपीज 10 lakhs 10 lakhs इन द बिगिनिंग में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट. सो 50 lakhs minus 5 lakhs minus 10 lakhs divided by 5 years. So your depreciation amount will be 7 lakhs. So depreciation amount will be 7 lakhs, P&L account debit to depreciation. So this is at the end of the year 1, end, and P&L account debit to depreciation, and then again depreciation account debit to fixed asset and P&L account debit to depreciation. So entries are very simple.
You can see here, yes, any difficulty in illustration number 1? So illustration number 1 का बेटा index you can write it. चलो जल्दी से हम लोग index भी लिख लेते हैं. Yes, you can write index or you can take a screenshot. अच्छा लिख लो index for S12. Option 1 is a deduction from the fixed asset. So bank account debit to fixed asset will be the entry. So bank account debit to fixed asset, and this is option number 1. Okay. Over. Write down over in the comment section, and please write over option number 2 also. Option number illustration 2 का भी index लिख लो, and even illustration 3 का भी लिख दो. Illustration 2 and 3 का index complete कर लो. चलो फटाफट. You please write it properly. Index of S12. Yes. Write down over in the comment section after illustration 2 index and after illustration 3 का index. Note down all 3 questions. And in comment section you write all 3 completed. All 3 completed. After writing this, all 3 completed. Don't take a screenshot. Please write it properly. Chalo. All 3 completed. सुप्रिया पाठक ने एक ने लिख लिया है. Other students, I am waiting for you. लास्ट वाला भी लिख दो बेटा, illustration 4. All 4 completed लिख दो. Fourth भी लिख लो. Grant received as a promoter's contribution, so credited to capital reserve.
Grant received as a promoter's contribution, so credited to capital reserve. कृति 9:30 तक चलेगा बेटा आज का सेशन, बिकॉज वी हैव टू फिनिश दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का भी रिमेनिंग पार्ट. डेप्रिसिएशन है. कृति ओके. All 4 completed. चलिए फास्ट 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 फास्ट. ओके डन. ऑल 4 कंप्लीटेड. चलो अभी हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं. यस चलो ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 2 क्या है? चलो बेटा एक बार वापस रिकॉल करेंगे. व्हाट आर द फर्स्ट? यस व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री इज वेरी सिंपल. फिक्स एसेट को हमने परचेस किया, सो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट हियर एंड वी गॉट द 10 लाख रुपीस एज अ ग्रांट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू fixed asset, because this is option number 1 which is deducted from the fixed asset. So this is deduction from the fixed asset. So grant received will reduce your cost, your depreciation also gets reduced. So 50 lakhs minus 5 lakhs minus 10 lakhs divided by 5 years, your depreciation will be depreciation account debit to asset or accumulated depreciation, and then P&L account debit to depreciation will be the last entry, and you know that 7 lakhs rupees you are going to charge to your P&L. So if you open your P&L account, see your P&L account में सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेगा? To depreciation 7 lakhs rupees. If you open this P&L account, you will understand that P&L account में कितना दिखेगा. तो it will look like 7 lakhs rupees का आपका depreciation होगा. So same question if we follow, but grant is treated as a deferred income. तो grant is treated as a deferred income, तो मेरा P&L account कैसे होगा? You can write over here. My P&L account will be like to depreciation. So now see what is the depreciation amount? 50 lakhs. 50 lakhs minus you're going to deduct 5 lakhs rupees over 5 years. So beta you are 49 and this is 9 lakhs beta, and your deferred GG will be transferred to P&L. So your deferred GG you can write over like this. So you received better 10 lakhs rupees and you will transfer to P&L only 2 lakhs rupees every year. So your deferred GG will show 8 lakhs rupees balance in the first year, that will be shown under the head reserves and surplus. In second year, deferred GG P&L credit 2 lakhs and your balance will show 6 lakhs rupees in reserves and surplus. And in third year, better 2 lakhs again. Then better 4 lakhs rupees will be shown under the reserves and surplus. Then 2 lakhs rupees in the fourth year, and in the last year it will be 0 rupees in the balance sheet. So balance sheet में कैसा दिखेगा बेटा? Balance sheet में आपका deferred GG reserves and surplus के अंदर deferred GG it will look like beta 8 lakhs rupees. So this is a extract of your balance sheet. So your balance sheet is not going to tally over here, but this is just extract of your balance sheet. So see your P&L account will be, net effect will be 7 lakhs, but how it will look like? So 9 lakhs rupees in the P&L account debit side में to depreciation, and by deferred GG 2 lakhs rupees, and balance sheet के extract में yes reserves and surplus के अंदर you are going to show deferred GG account rupees 8 lakhs. So this is very simple beta. Just understand what you have to understand here कि if first option we are following, तो in that case 10 lakhs rupees में से 2 lakhs rupees minus हो जाएगा. इतना याद रखो. सॉरी हाँ 10 lakhs में से 2 lakhs rupees minus हो जाएगा. P&L में जाएगा, remaining 8 lakhs rupees दिखेगा. But your depreciation amount is not after deducting the government grant, but it will be better showing after the only deduction of the salvage value. So what you understood between two methods? Yes, what is the difference between two methods? It's very simple. In first case, you are going to deduct it from the fixed asset. We already covered this in the theory part. So this is the problem parts बेटा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज? हम लोग illustrations को government grant की treatment जब मिलती है तो उसके साथ क्या खिलवाड़ किया जाता है ये हम लोग देख रहे हैं. So first entry will be बेटा in the year beginning year fixed asset account debit, year 0 में beginning में fixed asset account debit to bank, yes 50 lakhs, but same time in the beginning only bank account debit to you will open deferred GG account. So what is the difference? ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या किया था? You open fixed asset account, sorry you open fixed asset में से deduction किया था, and deduction from fixed asset. So this is basic difference. Then at the end of the first year, depreciation to fixed asset, P&L to depreciation, and deferred GG to P&L.
So deferred GG to P and L. So deferred GG to P and L आपका last entry होएगा. Deferred GG to P and L 2 lakhs 2 lakhs. Depreciation to fixed asset, P and L to depreciation and deferred GG to. Yes बेटा याद कर लो सभी एंट्रीज को. देखो फर्स्ट एंट्री विल बी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. सेकंड एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड हुआ ग्रांट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड जीजी. चलो मैं आंखों के सामने लेके आता हूँ. प्लीज क्लोज योर आईज एंड प्लीज ट्राई टू रिकॉल दिस एंट्रीज. चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए. Yes, close your eyes and first entry. First entry, yes, I will give you narration. So can you answer it? Dekho. First entry, you bought one fixed asset. Think it. I'm giving you 5 seconds. So fixed asset account debit to bank account. Second entry, yes, आके क्लोज ही करके रखना. सेकंड एंट्री, यू रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट. देखो रिकॉल करने का एकदम सिंपल तरीका. एंड प्लीज आपके दिमाग में से जो हजारे चीजें चल रही है, रिमूव ऑल योर थॉट्स फ्रॉम योर माइंड बेटा. First close your eyes and yes, ask to yourself whether you are getting this entry or not. So second entry will be bank account debit to deferred GG. What will be the third entry? Third entry, depreciation account debit to fixed asset. Then P&L account debit to depreciation will be the next entry. Yes, depreciation की entry कर दी, फिर P&L को transfer किया depreciation and now amortization जो भी हुआ deferred GG में transfer करो. deferred GG का balance 2 lakhs rupees transfer to P&L. So P&L को credit होएगा, deferred GG को debit होगा. deferred GG account debit to P&L. Yes. Can you recall all these entries? Easy છે or difficult છે? जल्दी से बताओ. Easy છે कि difficult છે? Yes, yes, beta. Darshan, yes, you are correct. Absolutely correct, beta. I have seen 55 to 70 students. They are very consistent about their studies. They never miss a single session. जो बहुत जरूरी था. और I don't understand why you are not attending these lectures. If you like the faculty, तो attend करने में क्या दिक्कत है? I have not seen कि मेरे बाकी के students जो होते हैं मैंने कभी भी देखा नहीं है. Those who bought my pen drives और ये सब मुझे I'm getting daily basis पे you know schedules from many students. तो many students they and even बेटा आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमें डेली बेसिस पे स्केड्यूल देखना चाहिए, तो बहुत जरूरी है. यस, इजी है. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. संतोष लिमिटेड. सी बिफोर थर्ड क्वेश्चन बेटा आई विल टेक अनदर 2 क्वेश्चंस. बिफोर थर्ड क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया सेम इसमें. नाउ इन द सेम क्वेश्चन बेटा 7 and 8 number. So come to 7 and 8 number questions. Okay. Now you only tell me. Illustration number 7. A fixed asset is purchased for. So 1, 2 के बाद you do 7 and 8, huh, beta? Yes. While revision also, yes, sequence will be like 1, 2 and then 7, 8. Okay. So immediately 7, 8 question. Yes. So I hope कि every one of you can do this in the same sequence at the time of revision. So you can note down somewhere कि yes, how to recall all these questions. So 1, 2, 7, 8. 1, 2, 7, 8. A fixed asset is purchased for 20 lakhs. A fixed asset is purchased for 20 lakhs. So what will be the entry? Chalo, yaad karo. Please close your eyes and tell me the entry. This is option number 1 you are going to do. Option number 1, that is deduction from the fixed asset. Fixed asset account debit to bank. Very good. Shamim ne
पहले एंट्री लिख दिया 20 lakhs 20 lakhs. Very good बेटा. Fix FA account debit to, yes. Otherwise you do one thing, you can type it in the comment section. Please don't refer these questions. Government grant received 8 lakhs and you are following बेटा balance sheet में option number 1. Net of grant आप लोग जा रहे हो. Net of grant means option number 1. So see the second entry. What is the second entry that you are going to pass? चलो जल्दी से comment section में लिखो. Entry number 2. 2 write down 2 and entry. कृष्णा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट डिफरेंस है ना बेटा. कुछ भी कृष्णा, अभी हमने पूरा कंप्लीट किया कि बैंक सेकंड एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू फिक्स एसेट. कृष्णा अरे तुझे दोनों में फर्क कैसे नहीं मिला रे? यस, हिमांशु पाठक ने लिख दिया सेकंड एंट्री. 8 लाख की एंट्री हमने क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट. ईयर 0 beginning. Okay, second entry bank to GG. Now what is the depreciation amount? So I will write over here depreciation 20 lakhs minus 8 lakhs 4 lakhs divided by 4 years. 8 lakhs, 2 lakhs rupees. So at the end of the year, depreciation account debit 2 lakhs and P&L to depreciation 2 lakhs. After 1 year, grant becomes refundable. Okay. So this is depreciation for year 1 to the extent of rupees 5 lakhs. So depreciation for year 2. So when grant becomes better refundable, so this is the IMP entry. What is the refund entry? Fixed asset account debit. This is the IMP entry. This is IMP entry. Refund entry. This is IMP entry because this is a refund entry. When you receive refund, you pass the entry bank to fixed asset. So when you are going to pay back the refund, so your entry will be fixed asset account debit to bank. So write down over there. And now what will be your depreciation amount? It's very simple. So now 20 lakhs, you deducted 8 lakhs. Or otherwise we will do one thing. What is your closing balance? Closing balance will be 12 lakhs minus option 1 का कितना था? 2 lakhs. So this is your closing balance after year 1. Correct? You can write over like this 10 lakhs. Depreciation for year 2 निकाल रहे. See 12 lakhs rupees balance था. 20 lakh minus 8 lakhs. So 12 lakhs rupees the balance. And from that you deducted 2 lakhs as a depreciation. You can see here now fixed asset. If you open this fixed asset account, fixed asset के debit में you can do in this way. Then 8 rupees and then 2 rupees is a depreciation. So what is your balance? 20 minus 8 minus 10, 2. It's 10 lakhs. And now 10 lakhs plus बेटा depreciation amount के पहले refund के वजह से you added 5 lakhs. कितना ऐड किया आपने? 5 lakhs you added. Yes, 10 हुआ and 10 plus 5, 15 lakhs. But your salvage value will be same ना. Salvage value will consider for your remaining life of the asset. So 3 years में अभी divide करेंगे. So this is the depreciation. Salvage value तो minus करना पड़ेगा ना boss. 15 minus 4 divided by 3. So what will be your depreciation? 3,66,667. See 3.67 and P&L to depreciation. So you can write in this way. Fixed asset का balance आया 15 lakh minus 4 lakhs. Refund you are going to add back. So refund में क्या होगा? You will add back in the asset. See what is the difference? Difference is very simple. First year में refund जो है वो हमें first year के बाद जो refund हुआ वो हमने asset में add back किया. So why you added it in the asset? Because when you received grant, what is the entry? Grant जब मिला तब bank to fixed asset. जब grant मिला था, grant received हुआ था,
ग्रांट रिसीव्ड हुआ था, तो यू पास द एंट्री बैंक टू फिक्स एसेट। आपने एंट्री क्या पास किया? बैंक बैलेंस बढ़ाया, फिक्स एसेट को रिड्यूस किया। सो व्हेन यू रिफंड, बैंक बैलेंस गोज आउट, तो बेटा बैंक बैलेंस नीचे जाएगा एंड फिक्स एसेट ऊपर जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंट्री इन द ऑप्शन नंबर 1, refund entry. So illustration 7 is related to refund. Yes, write down ILU 7 का index. ILU 7 and 8 I will give it in the both बेटा index साथ में देता हूँ, 7 और 8 का इंडेक्स में साथ में देता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस यू अंडरस्टूड? रिफंड की एंट्री क्या होती है? चलो याद करो, रिफंड की एंट्री मुझे बताओ क्या होगी रिफंड की एंट्री। चलो फटाफट बताओ रिफंड की एंट्री क्या करोगे? रिफंड की एंट्री क्या करोगे? चलो जल्दी से बताओ। रिफंड की एंट्री क्या करोगे? फटाफट बोलिए। रिफंड की एंट्री क्या करने वाले हो ऑल ऑफ यू? बेटा राइट डाउन ना फटाफट। बैंक टू फिक्स एसेट। बेटा रिफंड की एंट्री पूछा मैंने। मेनी स्टूडेंट सुप्रिया, रिफंड की एंट्री क्या होगी बेटा? रिफंड की एंट्री पूछा मैंने। आई एम नॉट आस्किंग यू एंट्री फॉर रिसीविंग ग्रांट। यस, कोमल ने गलत आंसर दिया बेटा, कोमल ने, बाकी सबने बराबर आंसर दिया। दर्शन रॉन्ग आंसर बेटा। रिफंड की एंट्री होगी फिक्स एसेट टू बैंक। रिफंड की एंट्री होगी फिक्स एसेट टू बैंक। भूमिका ने बराबर आंसर दिया। रिफंड एंट्री आई आस्क यू। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? फिक्स एसेट टू बैंक। यस, फिक्स एसेट टू बैंक। वेरी गुड बेटा जिया पटेल। चलिए इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट करो, मस्त क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। चलो चलो, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, in which you will get the difference between two options. So illustration 8 लिख के रखो, illustration 7, 9 number is different. Okay, illustration 7 लिखो कि ये इंडेक्स में लिख दो illustration 7 के बारे में। रिफंड एंट्री इन ऑप्शन 1 ए कैटेगरी, नहीं सी कैटेगरी लिखो। रिफंड, रिफंड in case of option 1 and illustration number 9, very important question. Illustration 9, please beta mark this as IMP question, mark this as IMP question. केस 1, केस 1 लिखो, GG credited to fixed asset.
credited to fixed asset. And I'm asking you show the journal entry तो है ही refund का and find out closing balance. Yes, addition करता हूँ and find out closing balance. चलो 40 lakhs का मशीनरी लिया, useful life is 4 years, residual value is 8 lakhs, government grant is 16 lakhs. If grant is credited to fixed asset, what will be the entry for refund? Yes, write down refund entry, fixed asset account debit, fixed asset account debit to bank account, fixed asset account debit to bank account, 16 lakhs पूरा रिफंड कर दिया, पूरा रिफंड कर दिया, refund 16 lakhs. Now I will show you the extract, beta. So only for your understanding, here to do one thing, P&L account, year 1, to depre. What is the asset value, beta? 40 lakhs. 40 minus 16 of grant and minus residual value 8 divided by what is the life of the asset? 4 years. So life of the asset is 4 years. So depreciation is 4 lakhs. And by P&L 4. Asset beta, year 1, balance sheet. So this is, sorry, not asset. This is balance sheet. And your fixed asset, 40 minus 16 minus 4. 4 is your depreciation. So 40 minus 16 minus 4. So this is 24, right? So ye 20 lakhs. Okay. Now this is year 1. Year 2, fixed asset. When you refunded beta? Yes, year 2 में तो same depreciation. Same depreciation. 4 and by P&L 4. This is only for your understanding. 20 ऊपर से आया. Okay, 20 minus depreciation is 4. 16. Straight line method of depreciation. 16. But year 3 में fixed asset 16. Okay, first I will calculate the depreciation. So now what is your balance? Balance is 16. Okay. Plus you have given refund of 16. Refund कितना दिया? 16. Minus your salvage value 8 and divided by 2 years. 12 lakhs.
by P&L 12. So 16 you refunded minus 12. 20. So to depreciation 12 by P&L 12 and fixed asset में आपका बैलेंस दिखेगा 20. Now this question is not asked. This is only for your concept clarity. 16 rupees balance था, refund किया 16. Salvage value is not going to change 8, but remaining life of the asset is 2 years. So P&L में जाएगा 12 and see your depreciation is deducted from your asset. So balance sheet में दिखेगा 20. Though it is not asked, it is only for your concept clarity. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. Yes, closing WDV is your 20 rupees. Closing WDV is your 20 rupees. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ में आया क्या? आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? लास्ट ईयर में बेटा डेप्रिसिएशन 16 था, क्लोजिंग बैलेंस 16 में भी रिफंडेड 1600 ऐड किया, सैल्वेज वैल्यू लेस किया एंड रिमेनिंग वैल्यू हियर रिवाइज हुआ. यहाँ पे हमारा ये रिवाइज हुआ, डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिवाइज्ड हुआ. Yes, are you getting this concept? रिवाइज डेप्रिसिएशन समझ में आया क्या? हाँ, नाउ यू ओनली टेल मी. यस, सेकंड केस 2 लिखो. केस 2 टेक ऑन रफ पेज बेटा. केस 2 में मुझे बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट credited to deferred GG. Now see, bank account debit, deferred GG account debit. Yes, I will tell you why. See, in exam you can't write all these entries. So deferred GG में बेटा कितना बैलेंस है? deferred GG में आपको 16 lakhs मिला था, minus 16 lakhs for 4 years, उसमें से 2 years are already completed. ये completed years है, 2 years. So 16 में से ऐड गया 8. Your loss is बेटा 8 and to bank you defer 16 rupees. अभी ये कैसे? Yes बेटा, I will tell you. चलो तब तक मैं आपको टाइम देता हूं. I am giving you exactly 3 minutes. आप मुझे 3 years का P&L भी बताओ and 3 years का फिक्स एसेट भी बताओ. I am giving you exactly 5 minutes. Yes. अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे भी बेटा आप लोग फोटो भेज दो. इफ पॉसिबल आप लोग लिख के टेलीग्राम चैनल पे फोटो भेज दो. चलो, यू सेंड मी फोटो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. यस, आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स. 5 मिनट्स दे रहा हूं. यू थिंक इट कि डेफर्ड जीजी कैसे दिखेगा. आई टोल्ड यू व्हाट इज द रिफंड एंट्री.
Over क्या? P&L up to 3 years.
ओके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आवाज नहीं था क्या? सॉरी। सी, चलो एक बार मैं वापस बताता हूँ, आवाज ही गायब था। सॉरी 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 सॉरी। यस, लेट्स अंडरस्टैंड। सी, इन फर्स्ट ईयर, यस, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पी एंड एल का डेप्रिसिएशन इज ₹8। सी, फर्स्ट ईयर में ₹40 minus ₹8 is the depreciation. How you calculated 8 is your salvage value and 4 years से आपने डिवाइड किया तो you are getting the depreciation ₹8. Okay, depreciation आपका 8 आया. And now what is the balance in deferred GG? Deferred GG में कितना बैलेंस था? Deferred GG में your balance is rupees. ओके, देखिए उसके बाद डेफर्ड जीजी में 16 रुपीज का आपको रिफंड हुआ, ग्रांट मिला था. सो 16 डिवाइड बाय 4 years, सो 12 रुपीज इज योर डेफर्ड जीजी बैलेंस and 4 rupees transfer to P&L. Out of 16, P&L में 4 rupees and deferred GG में you can see here P&L में 4 and deferred GG में 12. In the same second year, same story happens to depreciation 8 and by deferred GG 4 and 8. Balance sheet में ₹8 will be the balance. Deferred GG 4. Now what is the refund entry? Refund entry, you paid ₹16. You paid ₹16. So deferred GG ₹8. P&L ₹8 to bank ₹16. To bank में ₹16. So asset का balance मेरा बच गया 32. Then asset का balance मेरा बच गया 24. Now in third year what happened? Third year में depreciation is not going to change. Okay, in this method, depreciation is constant year after year. In first method, 4, 4, and then depreciation changes because of refund entry. But here, you're not credited grant to beta fixed asset account. So your government grant ka jo bhi amount hoga, that will be, depreciation will be continued. Okay, depreciation will be same. So this is the difference. But you will record loss on refund is ₹8. Loss kitna record kiya aapne due to refund 8. So your loss will be total ₹16 and your asset is continued at ₹16. So I have written here your P&L में, here it is ₹16 depreciation plus loss. But beta in the first option, रेड पेन से लिखना था, फर्स्ट ऑप्शन में लॉस इज लोअर. लॉस क्या था? लोअर था. What will be your assets value? Your assets value is 20, but here it is 16. Asset की value कितनी है? ₹16 है. So asset value is higher and this is lower. Think on this. This is the most important question. See, as per prudence concept, क्या होने वाला है? Option 2 is giving you much better answer than option 1 because loss is higher in year number 3 and in option 2, and in option 1 in year number 3 your loss is lower. Asset is showing higher value, but here asset is showing lower value in option 2. So more appropriate option is second option as per prudence concept. See, refund के case में your entry is going to change. Refund के case में your entries till now beta you can see here 32 is a balance, 32 minus 12 20. तो हमारा सिर्फ net दिखता था 20. 32 24 minus 8 16. But in year 3 16 and here it is only here 20. So option 1 and option 2 gives entry different answers in case of refund. Refund के बाद सब बदल जाएगा. Refund के बाद बदल जाएगा. Up to refund net effect is same. Up to refund, what I want to say, please understand my emotions. I want to tell you कि up to refund your answer is same, but after refund your answer is going to change. No one will give you this concept clarity. इतना detail में कोई नहीं बताएगा. And same thing, this conclusion you write it in the index also. ये इंडेक्स में भी लिख लो, ये कंक्लूजन इंडेक्स में भी लिख लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ईयर बाय ईयर ये क्या होने वाला है, ईयर बाय ईयर ये सेम रहेगा, इतना याद रखो. नवनीत जी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट इन ऑन टेलीग्राम ग्रुप. यस, स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे भेज दीजिए. नाउ इट्स क्लियर बेटा, कहां पे एंट्रीज, कहां पे नेट इफेक्ट बदल जाएगा. यस, वेयर योर नेट इफेक्ट विल गेट चेंज. चलो जल्दी से बताओ मुझे.
रिफंड के केस में यस, चलो जल्दी से बताओ, सभी सभी बदलाव कहां पे हो जाएगा? यस, आफ्टर रिफंड बेटा आपकी दुनिया बदलने वाली है। यहाँ पे यूर ऑल एंट्रीज विल गेट चेंज आफ्टर रिफंड। तो कहां पे चेंज होने वाला है जल्दी से मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो टेल मी फास्ट, चेंज कहां पे होगा? चेंज कहां पे होगा? चेंज इज विल बी आफ्टर रिफंड। आफ्टर रिफंड बेटा चेंज हो जाएगा। यस, कमेंट सेक्शन में भी बताओ, कमेंट सेक्शन में भी बताओ। यस, सो ईयर 3 में यस बेटा, कृति का तो प्रैक्टिकल है, चिन्मय दास का भी प्रैक्टिकल था शायद से। प्लीज आपके बीकॉम के एग्जाम टिप्स, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम टिप्स आफ्टर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। यस, टेल मी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे हमारे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे क्या? We have done with the accounts almost 80%. अभी आपके hardly there are 2-3 chapters which are remaining. Change will be after refund. Yes. So refund के केस में change होगा. This is the most important point of this standard. कि refund. No one will tell you this thing, हाँ बेटा, कोई पूछा भी नहीं है. Yes, it is not asked in the exam. But while doing self study, yeah, understanding the concept, you have to see what is the difference in both cases. Both cases will give you the net effect same up to the year of refund. Net effect, I'm not saying beta presentation is always different, presentation is always different, but what is the net effect is same. But after refund your net effects are also changing, your net effects are also changing. Loss will be higher in case of second option, and asset value will be lower in the second option, loss will be lower in the first option, and asset will show higher balance. Yes, कैसा था ये? Yes, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था या इजी कॉन्सेप्ट था? क्या लगा आपको? इज इट डिफिकल्ट वन और नाउ इट्स वेरी क्लियर up to refund? Yes beta, now nothing is remaining in this standard, hardly 10 minutes का standard है अभी. Yeah, this is the important, this is the crux of this accounting standard. Refund entries, refund entries in case of if asset is credited to fixed asset and if asset deferred GG account is open. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट था, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्रक्स था, एंड दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट नाउ. यस, अभी इजी है, वेरी मच क्लियर, वेरी गुड बेटा. तो रिफंड के बाद बेटा आपको क्लैरिटी आना चाहिए रिफंड के बाद. चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 को सॉल्व करते. सो 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा, 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट. 7 वी हैव डन. हाँ जी, 8th को देख लेते हैं. Eight. On 1st April 2000, ABC Limited 300 lakhs का acquisition of the machinery costing rupees 1500 lakhs. Grant is 300 lakhs. Sorry, 300 lakhs का grant मिला, 1500 रुपए का machinery था. The grant was credited to the cost of asset. Very simple question. Refund we are going to add it in the year 2004 में. The grant is credited to cost of asset. Credited to cost of asset means option 1. Option 1 you can write over there, credited to cost of asset means deferred GG account is not open. The life of the machinery is 5 years. So 5 years बेटा to confuse us. 5 साल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि WDV में से बेहतर, WDV में बेटा, WDV में रिमेंबर लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट इन WDV मेथड. रिमेंबर लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू, life and salvage value, not IMP, not important. Not important. Life and salvage value not important. The company has to refund the grant in May 2004
ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस. सो रिफंड कितना करना है? 300 lakhs का. What will be the entry after third year? See, it's very simple. You can take a screenshot. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. See, you bought one asset for 1500, correct है? Then you received a grant कितने का मिला? 300, बराबर. Net asset 1200. Depreciation in the first year 20%. So 20% is 240. So take on calculate 1200 into 20%. 1200 into 20% minus is equal to 960. Book value 960. Again into 20%, 192. So book value is minus is equal to 768. Again into 20%, 153.6. So book value 14,2004 का, yes, minus is equal to करो कैलसी पे 614.4. And now you refunded on 1/5. So add it. Now your revised book value is 914. 9 plus 300 किया into 20%. 182.88. So this is a depreciation. Depreciation prospective effect देना है. Easy है क्या ये क्वेश्चन? देखो जस्ट देखो एकदम सिंपल है. फर्स्ट ईयर में 1200 नेट ऑफ ग्रांट, उसके बाद डेप्रिसिएशन 960, फिर से डेप्रिसिएशन 768, वापस डेप्रिसिएशन 614, ऐड किया 300, रिफंड एडेड हियर, add refund and you will get the answer. Easy है. Take a screenshot and you will get the answer. ओवर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने लगा ना तो बच्चों का अपना यही हो जाता है कि भाई इतना डिफिकल्ट चीज हम लोग कर. सो WDV मेथड 1 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं बेटा, पूरा ही निकाल देंगे. गुड क्वेश्चन. राहुल जैन पूछ रहा है सर 1 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं बेटा, इतना नहीं देखेंगे. रिफंड किया वो साल में तो पूरे के पूरे साल में रिफंड का लगा देंगे डेप्रिसिएशन. यस, डोंट कैलकुलेट फॉर 1 मंथ. गुड क्वेश्चन राहुल जैन, गुड क्वेश्चन बेटा, बट डोंट सॉल्व. नहीं करना है. चलिए, सो 8 इज ऑल्सो ओवर. 8 को इसमें लिखना, refund in case of WDV method. Refund in case of WDV method, only depreciation calculation. Only depreciation calculation. सिर्फ depreciation का calculation. ठीक है. चलिए, अरे ये इजी था यार, ये इजी था. 8 नंबर वॉज वेरी सिंपल. यस, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ, नाउ 3 हो गया क्या? अभी कौन सा बाकी है? 8 हो गया, 7 हो गया, 6 is very simple बेटा. ओनली रिफंड एंट्री 6. अभी कौन से बाकी है? चलो 3, 4, 5, 3. अभी आगे के बहुत इजी है. Santosh Limited has received a grant of 8 crores from the government for setting up of the factory in the backward area. Out of this grant,
the company distributed 2 crores. See, setting up of the factory in a backward area means promoter's contribution. It is called as promoter's contribution. And company receives 2 crores as a dividend उसने distribute किया. Allowed नहीं, allowed नहीं है. It is not allowed. Also Santosh Limited received land free of cost. Free of cost का बेटा क्या हो जाएगा बताओ? Free of cost मतलब you will record it as a nominal value, but it has to be recorded in the books of money has been spent. No, not recorded. तो ठीक है, fair value पे बता सकते हो या nominal value पे भी बता सकते हो. तो treatment बताइए. Very simple question. Yes, facts of the case. So exam presentation, you can take a screenshot, telegram pe bhej do. Facts of the case. First case is a Santosh Limited has received the grant of rupees 8 crores from the government for setting up of the factory in the backward area. Out of this grant, the grant company distributed 2 crores as dividend. Allowed it nahi hai. Santosh Limited received a free of cost land, but it has not been recorded in the books of money as no money has been spent. चलो प्रोविजन एंड कंक्लूजन. एक सेकंड. प्रोविजन एंड कंक्लूजन एस्ट ये निकाल देता हूं. यस, वेट. प्रोविजन एंड कंक्लूजन एज पर S12 government grants. When government grant received for a specific purpose, it should be utilized for the same purpose. And even if money has not been spent for the acquisition of asset should be recorded in the books at a nominal value. Thus, it is company cannot use it for the distribution of dividend, and the company should record the land at nominal value. Nominal value पे करना है. So company ने जो treatments दिए is not correct. चलो take a screenshot बेटा. Write down all these answers today itself. आज ही आंसर्स लिख लीजिए. इलस्ट्रेशन 4. यस, इजी था ये भी. अभी आगे के क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कुछ है ही नहीं. टॉप एंड टॉप लिमिटेड, टिप एंड टॉप नहीं है, टिप टॉप नहीं है. टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप अ बिजनेस इन द बैकवर्ड एरिया. बैकवर्ड एरिया में मतलब सब्सिडी मिला 20%. प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन for which no repayment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company should purchase any specific asset for this subsidy. So company investing 50 crores in the capital asset and received 10 crores from the government in January 2002. Company treat this as a receipt of revenue in nature. गलत छे. Promoters contribution. रट्टा मार. Yes, backward area. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. So ये कंपनी ने क्या करना चाहिए? इट इज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और कैपिटल रिजर्व में डालना चाहिए. चलो इलस्ट्रेशन 4. प्रोविजन. कंपनी ने रेवेन्यू करके ट्रीट किया. रेवेन्यू मतलब पी&एल में डाल दिया. अलाउड के नॉट अलाउड. अलाउड नथी. चलो ले लिया. सो कंक्लूजन नॉट अलाउड बेटा, इनएप्रोप्रिएट. कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना चाहिए. 5 नंबर ओवर. ठीक है, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर ओवर. हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स ऑफ accordance with S12? 35 lakhs received from the local authority for providing medical facilities. मेडिकल फैसिलिटीज रेवेन्यू इन नेचर. रेवेन्यू अपने लोगों को हर साल मिलेगा ना. and 100 lakhs received as a subsidy for setting up of the backward area. So second one बेटा promoters contribution. तो promoters contribution एकदम से ले लो. ये तो पूरा ही ले लो बेटा स्क्रीनशॉट. रेवेन्यू इन नेचर आइदर अदर इनकम में बताओ या एक्सपेंसेस में से माइनस करो. ऑलरेडी रोड दी ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है. Illustration 5. Facts of the case, provision and conclusion. 35 lakhs किधर जाएगा? Revenue in nature. And दूसरा question, promoters contribution credited to capital reserve. 5 नंबर ओवर. 6 नंबर रिफंड की एंट्री है, एकदम इजी है. ओके, सो रिफंड एंट्री 5 नंबर इंडेक्स में लिखना revenue in nature plus promoters contribution. Revenue in nature plus promoters contribution, category C. 6 का लिखो refund entry.
एंड सेवंथ लिखो जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ रिफंड, ऑल जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ रिफंड। और 8 का क्या था? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इन केस ऑफ रिफंड। 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यस, S12 इजी छे, मॉड्यूल क्वेश्चन खत्म, मॉड्यूल के क्वेश्चन खत्म होते हैं S12 के। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। S12 कैसा था? S12 बेटा ओनली 9 नंबर इज इंपॉर्टेंट, ओनली 9 नंबर इज इंपॉर्टेंट। सभी आंसर्स टेलीग्राम पे भेज दिए शायद से इन्होंने। आहा, नवनीत जी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। यस, बहुत सही। Yes. Now your questions related to S12. Otherwise, we will take a break or two. हम लोग मिलेंगे. Understood and very easy. बेटा नहीं 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 नहीं. Now in illustration number 3, Himanshu, for illustration number 3 they received it for promoters contribution. Promoters contribution के लिए मिला तो बेटा वो आएगा कैपिटल रिजर्व में. एंड सपोज इलस्ट्रेशन 5 में दे रिसीव्ड इट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज उसी साल में एम्प्लॉइज को यूज करना है, तो दैट इज इन रेवेन्यू इन नेचर, नॉट एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन. सो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होगा तो कैपिटल रिजर्व, मेडिकल फैसिलिटी के मिला तो रेवेन्यू इन नेचर, इतना याद रखो. ओके, सो सी व्हाई यू आर गेटिंग दी ये ग्रांट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी S12 बहुत इजी था, तो S12 मेरे साइड से खत्म होता है. देन बेटा वी विल टेक अ ब्रेक. 8 नाउ इट्स 8:22, 8:35 को हम लोग मिलेंगे. टेक अ टी ब्रेक और 8:35 को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिए S12 एंड एग्जाम टिप्स आई विल गिव यू आफ्टर दी S11. ओके, 11 के बाद संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन रख के, आई थिंक S10 हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो संडे को 1 आवर फॉर दैट प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ चैप्टर नंबर 2 देख लेंगे. एंड बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वी विल टेक ऑन द संडे. तो वी विल सी ऑन दिस संडे. तो ये लास्ट होगा. सो एग्जाम टिप लास्ट 15 मिनट्स आई विल गिव यू कि करना क्या है. ओके, so S11 we are going to complete it after break. Very important standard, please make sure don't miss it. Okay, बिल्कुल मिस मत करना S11 को. चलो अभी टेक अ ब्रेक, चलो जल्दी से ब्रेक ले लीजिए.
चलो, let's start for AS11. AS11 के questions are easy as compared to AS12. नहीं, AS11 भी easy है, बहुत easy है. Okay, so only I think there are 5 to 6 questions है. फाइव सिक्स क्वेश्चंस. एक ही मिनट है बेटा. चलो, आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो पूछ लीजिए. जस्ट चेकिंग कि आपका कुछ मैसेजेस देख रहा हूं. हाँ जी, ओके. AS11 में फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. इलस्ट्रेशन 1 में AS11 क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज पर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी का मीनिंग क्या है लिख दो. अमाउंट इज डिटर्मिनेबल. If amount is not determinable, not fixed, then beta it is non-monetary. Inventory, your book value is different from your selling value, so it is non-determinable. तो नॉन मॉनिटरी में आएगा. ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू इज सिमिलर, सो ये मॉनिटरी में आता है. इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनिटरी में आएगा एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी नॉन मॉनिटरी में आएगा. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, गुड्स परचेस on 1/1/2001 when $1 is equal to 75. फिर 31st March को rate is 74, so you purchase, so you have to pay less, and 73, so either 1 rupee gain and either also 1 rupee gain into 15,000. So what will be your entries? Entries are very simple. So ये आपके डायग्राम है, ये डायग्राम देखो. I will read the answer for you. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. As per AS11, the effects of changes in foreign exchange rates, all foreign currency transactions should be recorded by applying the exchange rate on dot, and on balance sheet date, all monetary items should be recorded at closing rate. बेटा थोड़े से पेशेंस रखिए. And the balance sheet date पे जो भी exchange rate होगा, that will be transferred to P&L account. किधर ट्रांसफर कर देंगे बेटा? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. किधर ट्रांसफर करेंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो 75 रुपीज, 75 का 74 हुआ तो 1 रुपी गेन, 1 रुपी गेन का 74 का वापस 73 रुपीज हुआ तो अगेन 1 रुपी प्रॉफिट. सो योर कंक्लूजन है यहाँ पे 1 रुपीज प्रॉफिट इंटू $15,000, 1 रुपी प्रॉफिट इंटू $15,000. टेक अ स्क्रीनशॉट, भेज दो बेटा नवनीत जी. एंट्रीज, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, purchases to creditors, then creditors to P&L, and again creditors to P&L to cash. Creditors to P&L to cash.
इजी છે. Okay. So second illustration is also very easy, related to goods. Next question. Third question, beta. Kalim Limited borrowed loan, short-term borrowings, है बेटा, short-term borrowings on 1/1/2001, which will be repaid as on 31st July. So draw the diagram. 1st January, 31st March, and 31st July. लोन लिया तब रेट था 48, then 49, and then 49.5. Loss of ₹1 and loss of ₹0.5. Yes. So entries are, you can take a screenshot. Bank account debit, DOT, date of transaction, DOB, date of balance sheet, DOS, date of settlement. Bank to loan, loan is a monetary item. Then बेटा 0.48 से लोन था, फिर 1 into 4,50,000, and then लोन रिपे किया तो लोन को डेबिट देंगे, अगेन एक्सचेंज लॉस टू बैंक अकाउंट. सो पहले एंट्री क्या होगी, लोन लेना बैंक टू लोन, लॉस रिकॉर्ड करना लॉस टू लोन, एंड लोन रिपे करना लोन अकाउंट डेबिट. यस, पर कितने अमाउंट से, 2,16 lakhs पर 4,50,000 टू बैंक 49.5, बैलेंसिंग फिगर लॉस को डेबिट आएगा 2,25,000. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. यस, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ओवर. एंट्रीज याद करो चलो एक बार. बैंक टू लोन, लॉस टू लोन, and last entry will be loan account debit, loss account debit to bank account. नवनीत जी ने ऑल ये स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दिए हैं, सो डोंट वरी. नाउ बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये है, प्लीज ध्यान देके सुनना, बिकॉज दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. 4 and 5 ओवर, 4 और 5 लास्ट क्वेश्चन है बेटा. तो S10 आज ही हमारा खत्म हो जाएगा. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 10 minutes आई वांट फुल फोकस. यस, टिल नाउ एनीथिंग डिफिकल्ट? कुछ भी डिफिकल्ट है क्या अभी तक का? यस, एवरीवन. अभी तक कुछ डिफिकल्ट है क्या? क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा शुरू. यस बेटा, दर्शन इफ इट इज सेल तो ये लॉस था. वेरी गुड बेटा. और कुछ क्वेश्चंस है S11 से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो बताइए. अदर स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से बताइए. ओके. चलिए, now very important concept, please now focus. You have to understand these questions. These questions are not very simple. Rao Limited purchase a plant, okay, for US $1, $1 lakh on 1st Feb, payable after 3 months. He entered into a forward contract. As he purchased a plant and he entered into a forward contract, this is for hedging purpose, not for speculation, because he wants to pay for that plant, creditors of plant. So he entered into a forward contract. देखो ये enter क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्लांट खरीदी किया और प्लांट के साथ साथ he has to pay to that creditor. तो क्रेडिटर को पेमेंट करना था, दैट्स व्हाई ही एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हेजिंग ट्रांजैक्शन है. ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? हेजिंग का ट्रांजैक्शन है. तो हेजिंग ट्रांजैक्शन
फर्स्ट फेब का रेट क्या था? सी नाउ देर आर टू रेट्स, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट. यू ड्रॉ लाइक दिस. मैं वापस लिखता हूं. 1st February you draw like this, spot rate and forward rate. Spot rate means today's rate. Forward rate is after 3 months. अब ये forward rate कब का है? After 3 months का. Now see what is given in the question. Means after 3 months, how much he has to, if he has to buy the dollar, he has to pay 49.15. And first Feb का rate है 48.85. So this diagram is very important. Forward rate means after 3 months he will pay 49.15 and buy $1. Okay. March 31 and 1st Feb मतलब अप्रैल फेब हुआ, मार्च अप्रैल मई, 1 मई rates are missing. Spot rate and forward rate. So loss, you will consider loss 0.3 or divided in 2 months and 1 month. So during the year 0.2 and next year 0.3. 2 months is to 1 month. This is the loss that you have to divide. Other forward rates are not important in hedging transaction. This spot rate, forward rate are not important. Only forward rate and spot rate of 1st February is important. As per hedging, you are going to divide it in the ratio of 2:1. Okay, 2 months, 1 month. ये याद रखना. It's very easy. तो बेटा ये जल्दी से याद कर लो. Draw the diagram, beta. Sorry, take a screenshot of this diagram. This is in case of hedging transaction. स्पेकुलेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा. स्पेकुलेशन में चेंज हो जाता है. स्पेकुलेशन में ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट. सी बेटा कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बिकॉज हेजिंग एंड स्पेकुलेशन आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो डायग्राम विल हेल्प यू आउट. ओके, सो डायग्राम निकालो, उस दिन का स्पॉट रेट लो, उस दिन का फॉरवर्ड रेट लो एंड डिवाइड इट इन द मंथ्स. यू डोंट नीड द स्पॉट रेट ऑफ 31st March, you don't need the forward rate of 31st March, you don't need spot rate of 1st May, and you don't need forward rate of 1st May. Okay, in case of hedging transaction. And how to understand this is hedging? Hedging में कुछ तो plant लिया है या कुछ तो buy किया है, and that's why you have to enter into a forward contract. It is not for speculation purpose. And I already explained you the theory part. So how to write the answer? Yes, loss will be 0.3. So this is 20,000 and this loss is 30,000. So this is the proper diagram. Transaction date, balance sheet date and settlement date. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now very important question. So this question is of hedging. Now I am going to explain you the concept of speculation.
हेजिंग इलस्ट्रेशन 4 था. Speculation is very difficult question, beta. Mark as most important question of S11. डायग्राम में निकाल के देता हूं. फाइव इज लास्ट इलस्ट्रेशन. नहीं, और एक इलस्ट्रेशन है. 6 and 7 I'm not going to solve because it's related to integral for an operation. And last question I will solve with a 8 number. I have taken full study material. See, लास्ट में स्टडी प्लान देता हूं तो कुछ क्वेश्चंस है जो मिसिंग है. yes, it's not possible to cover it. I have shown in this batch you all directions. Yes, I know कि इसका help you will get this help only to reach up to 50 marks. But beta next 30 to 40 marks how to score that exam strategy tips. Yes, you want exam strategy tips or you want beta S10? जल्दी से बताओ. कमेंट. yes, कमेंट सेक्शन में ये बताओ. should I take S10 today or should I first give you exam strategy how to prepare it for? okay, तो आज S10 लेके exam strategy should I give it on Sunday or you want exam strategy today? so Sunday को हम लोग वो बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे. you only tell me. चलो, तब तक आप लोग लिखो कमेंट सेक्शन में. ओके. चलो, सुप्रिया बोल रही है एग्जाम, मनीषा एग्जाम, तनीषा एग्जाम, गुडरी जी एग्जाम. Mr. A bought forward contract. So beta directly forward contract. So this is speculation, not for against any asset. Asset के against नहीं है. For 3 months, 1 lakh rupees on 1st December. Yes, अभी देखो डायग्राम ड्रॉ करो. अगेन डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए. स्पॉट रेट आफ्टर 2 लाइन्स, फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 लाइन, बीच में एक लाइन छोड़ना, फॉरवर्ड रेट. 1st December spot rate 47.10. he entered into a forward contract 1st December 47.10. and here $1 is equal to 47.02. this is 31st December. December, January, February, January, February, March. हाँ, सो 1 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा. ओके, व्हाट इज गिवन? स्पॉट रेट इज 47.02. 31st December को 47.15 is a spot rate. 15 is a spot rate. And on 31st Jan, ये फॉरवर्ड रेट बाय का है, बाय का. एंड 31st Jan को he entered into forward rate sale. Sale $1 is equal to $1 is equal to 47.18. 31st Jan. This is missing.
ये भी मिसिंग है. ओके, नो इंफॉर्मेशन. एंड 31st Jan इज अ डेट जहां पे ही कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ सी, दिस इज द डायग्राम. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दिस इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन में ये यूज का नहीं है, ये यूज का नहीं है, ये यूज का नहीं है. ओके, नाउ 1st February को ही एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 months. 3 months मतलब क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का 3 months मतलब बाय है $1 ऑन 1st of March at 47.10. ये उसका मीनिंग है. बाय $1, $1 47 1 मार्च को at 47.10. What is spot rate? If he buys $1 on 1st of December, तो 47.02. Now normally इसको बोलते मार्क टू मार्केट. इसको क्या बोलते? मार्क टू मार्केट. तो यू हैव टू मेक द चेंजेस. ओके, सो क्या होगा? इधर भी, इधर का बाय $1 ऑन 1st of March. तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? बाय $1 फ्रॉम 31st December टू 1st of March. तो आई हैव टू एंटर. तो इधर मुझे फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? ये 3 months है. पर दिसंबर में 31st December में जनवरी फरवरी, तो मुझे $1 बाय करने का 2 months का ये रेट होगा. मैं एंटर किया 47.10 से. So I will buy $1 at 47.10. But suppose if I'm giving you कि at that time if your 2 months का contract is at 47.15, कितना? If this figure is given, assume 47.17. Assume. So don't write it. 47.17. तो बेटा I will buy $1 after 2 months at 47.17. This is the date of balance sheet. This is the date of balance sheet. This is date of transaction. This is date of settlement. So समझ लीजिए. What is the provision? See, this is the provision. Speculation is not very simple. Let's try to understand it. I will buy $1 at 47.10 after 3 months. Okay. So your settlement is on 1st of March. Now, what is the accounting standard 11 provision? Accounting standard 11 says you do the mark to market concept. मार्क टू मार्केट मतलब क्या? मार्क टू मार्केट का मीनिंग है इफ ट्रांजैक्शन इज बेटा डन ऑन 31st December to buy $1 at 1st March. If you want to buy $1 on 1st March, तो बेटा 31st December को you entered into a forward contract. मतलब कितने महीने के बाद? After 2 months. So after 2 months later, if you buy $1 for rupees, yes beta, after 2 months, if you have to pay 47.17 after 2 months. So now I'm in profit. Why? Because I bought it at 47.10 and the figure is 47.17. I will buy. Suppose मैं 1 महीने के बाद आता था कॉन्ट्रैक्ट में कि 1 मार्च को मुझे पैसा चाहिए. I want money on 1st of March, $1. So beta, I have to pay 47.17, but I entered into a 1st of December. So I'm in the profit of 0.07. तो ये फिगर मिसिंग है. Otherwise I will book 0.07 profit in my books of accounts. मैंने क्या किया रहता? मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होता. सो मैंने क्या किया होता? ये मार्क टू मार्केट. व्हाट इज मार्क टू मार्केट? बाय $1 ऑन 1st of March. सो ये कितना बाय किया? बाय किया 2 months का कॉन्ट्रैक्ट. 2 months का कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर हुआ. बाय 2 months का कॉन्ट्रैक्ट. अंडरस्टूड? तो मैं 2 months के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया. ठीक है.
तो 2 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एंटर किया एंड दिस इज, सो आई विल रिकॉर्ड दिस प्रॉफिट बट दिस फिगर इज मिसिंग, और मिसिंग फिगर होने की वजह से आई वोंट पास एनी एंट्री. नाउ बेटा व्हेन देयर इज अ सेटलमेंट डेट ऑन 1st of March, okay, but what happened, I don't want to enter into buy contract, I want to cancel that contract. So if you want to cancel that contract, you have to do opposite strategy. आपको क्या करना पड़ेगा, opposite strategy. मतलब एक अभी यहाँ पे मैं 31 जन को I want to cancel the contract. So इसका मीनिंग क्या होगा, you will enter into a forward contract of sale, buy के बदले में sale. So you will sell $1 when you will sell this $1 on 1st of March. तो आपको कितना महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेल मतलब 1 मंथ के फॉरवर्ड में एंटर करना पड़ेगा. यू हैव टू एंटर, सो ऑल सेटलमेंट्स आर 1st March, 1st March, 1st March. That is 1 month sale forward contract. So you enter into, if you want to enter into a forward contract, so and you want to cancel it, how to cancel it? You can't cancel immediately. You have to enter into opposite contract. So now what happens? Now what happens, beta? Now on 1st of March, you will buy $1. आपने $1 बाय किया ऑन 1st of March. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1st March में यू विल बाय $1 at 47.10 and you will sell $1 at 47.18. on 1st of March it is going to happen. So you will earn profit of 0.08 on 1st of March. But beta, now you don't have to wait up to 1st of March. This is going to happen. Going to happen. Sure shot you are going to happen, na? Because you enter into forward contract. So going to happen on 1st of March, and you know this is going to happen it is on 31st of Jan. When you are aware about all these things, you are aware about all these things on 31st of Jan. So record your profit. So record it today. Record इसी दिन करना है. Record कौन से दिन करना है? Don't wait up to 1st of March. This is going to happen and record it on 31st of Jan. So what is the new thing in speculation? New thing in speculation is you are going to do mark to market 31st December को. कितने महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कितने महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? 2 months का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. सो हमने कुछ भी नहीं किया, इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. पर होता तो बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया होता. देन बेटा क्या हुआ, आई वांट टू कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो कैंसल कैसे करना है, एंटरिंग इनटू अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट. सो सेल $1 at 47.18. when you have to sell it on 1st of March, but when you want to enter 31st of Jan, तो एक महीना फॉरवर्ड रेट में यू एंटर इन सेल स्ट्रेटेजी. सेल के स्ट्रेटेजी में एंटर हुए. देखो एक बार हिंदी में बताता हूँ. 1/12 को, एक बार हिंदी में समझ लो, 1/12 को स्पॉट रेट दिया था. 1/12 का ही बाय रेट है. बेटा ये डिफिकल्ट है, मुझे पता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस यू अप्लाई ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, इट इज वेरी सिंपल एंड आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. मैं बहुत सिंपल करूंगा, समझ लो. 1/12 को आप एंटर हुए. स्पॉट रेट कितना था, 47.02. कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसको स्पेकुलेशन बिजनेस में करना था. तो मैंने क्या बोला, ऐसे ही मैं सट्टा खेल रहा था. मैं सट्टा क्या खेला मैं, कि मैं $1 बाय करूंगा 1 मार्च को, मतलब मैं 3 महीने के बाद $1 बाय करूंगा. कितने में, 47.10. आज का रेट कितना है, 47.02. कोई लेना देना नहीं है. अभी क्या होगा, यस ये समझ में आया कि 3 महीने के बाद. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या बोलता है कि 31 जब भी बैलेंस शीट डेट होगा तो मार्क टू मार्केट कीजिए. मार्क टू मार्केट मतलब क्या, जो भी बैलेंस शीट का डेट है, बैलेंस शीट का डेट है, उधर का स्पॉट रेट नॉट इंपॉर्टेंट, 47.15. कौन सा रेट इंपॉर्टेंट है, उधर का फॉरवर्ड रेट. मतलब क्या, उधर भी आपने $1 बाय करना चाहिए. यदि मैं 31 दिसंबर को $1 बाय करता हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से,
मतलब मैं 31 दिसंबर को 1 मार्च को मुझे फॉरवर्ड $1 चाहिए, मतलब 31 दिसंबर के आगे कितने महीने, ओनली 2 मंथ्स। तो मुझे कितने महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 मंथ्स। मैं ऑलरेडी कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आया था सर, मैंने $1 मुझे परचेस करना था 3 महीने के बाद, पर अभी मैं उसको मार्क टू मार्केट करूंगा। मार्क टू मार्केट मतलब 1 मार्च को यदि $1 मुझे चाहिए बैलेंस शीट डेट्स के आगे, मतलब 1 मार्च के आगे कितना, 1 मार्च मतलब कितने महीने, 2 महीने के बाद, तो मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा। मतलब मैं मेरे मार्क टू मार्केट, S11 क्या बोलता है, मार्क टू मार्केट कीजिए। मार्क टू मार्केट मतलब क्या, कि यदि वो कॉन्ट्रैक्ट आपने 31 दिसंबर को किया रहता तो कितना होता था, तो मैं 2 महीने के एंटर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट में। 2 महीना क्यों, 1 मार्च, 31 दिसंबर से कितना होता है, जनवरी एंड फरवरी, 2 महीने के बाय कॉन्ट्रैक्ट में। पर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है सर उसका, तो मैं कुछ नहीं करेगा। नहीं तो इधर एंट्री होती थी सर, यदि एज्यूम करो उधर का एंट्री 47.17 रेट होता, मैं कितने में बाय करने वाला हूँ, 47.1 महीने में, 1 रुपी में 3 मंथ्स का, और 2 मंथ्स पे लेके आना है तो मुझे, यस मेरा तो पैसा बचा ना, मेरा को तो फायदा हुआ रहता कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर चला गया, और मतलब $1 47.18 में आने वाला है, जो मुझे 47.110 में ही मिल गया, तो बेटा मेरा 0.0708 का फायदा हो गया। जो भी रेट होगा 47.1718 जो भी रेट होगा, मेरा फायदा हो जाएगा, पर वो इन्फॉर्मेशन ही मिसिंग है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी मैं 1 मार्च की राह देखूंगा, बट बीच में ख्याल आया यार आई वांट टू सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कैंसिल करना है तो क्या, मैं बाय करने वाला हूँ 1 मार्च को $1, तो कैंसिल करना होगा तो $1 मुझे बेचना पड़ेगा। तो बाय और सेल उस तरीके से ही मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 31 जनवरी को मुझे इच्छा हो गई कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, तो कैंसिल करने के लिए मुझे सेल कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। तो मैं $1 कितने में बेचूंगा, तो उस दिन का रेट चल रहा था सेल का, अभी सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, एक 1 मार्च को सेल किया तो क्या, 31 जनवरी को इच्छा हुई 1 मार्च को मैं सेल करूंगा, देखो मैं वापस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। पूरा सेटलमेंट कब होने वाला है, पूरा सेटलमेंट 1 मार्च को होने वाला है, पर मैं एंटर कब किया सर, 1 मार्च को सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। सर कॉम्प्लिकेटेड छे, बट दिमाग लगाए तो एकदम इजी है। सब कुछ कब होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन 1 मार्च, पर मैं ये सब झमेला कब हो रहा है, बाय सेल का पूरा 31 जनवरी को आपको लगा कि मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, तो मैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आया। तो 1 महीने के बाद मैंने डॉलर बेचा तो कितना रुपया मिलेगा, 47.18। मुझे पता है कि ये आज ही समझ में आ गया, और मैं बाय कितने में करने वाला उस दिन, जो 3 महीने के एंटर करके बैठा है, मैं 3 महीने पहले मैं $1 बाय करके बैठा हूँ 47.10, और 1 महीने के बाद मैं सेल करूंगा तो मुझे 47.18 आएगा। सबका सेटलमेंट 1 मार्च को होगा, पर प्रॉफिट में 31 जैन को ही बुक कर दूंगा। मैं तो खुश हो गया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अभी मुझे बाय करके सेल वो उस दिन हो जाएगा, पर मैंने तो प्रॉफिट बुक कर दिया। कितने का प्रॉफिट बुक कर दिया, 0.08 का। कब बुक करना है, 1 जैन मार्च तक रुकना है क्या, 1 मार्च तक रुकना नहीं है, 31 जैन को पूरा पिक्चर क्लियर था, पूरा पिक्चर क्लियर था कि क्या होने वाला है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेकुलेशन। सर स्पेकुलेशन डिफिकल्ट है, हाँ सर समझ में आता है क्या बच्चों को, नहीं आता है। 95% स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, स्पेकुलेशन समझ में नहीं आता उनको। रेट्स आर मिसिंग 1 मार्च के, जरूरी भी नहीं है। सो हाउ टू एंटर, और 31 दिसंबर का भी फॉरवर्ड रेट मिसिंग था, नहीं तो मार्क टू मार्केट किया होता, पर मार्क टू मार्केट क्यों नहीं करेंगे, रेट इज मिसिंग, तो हम लोग डायरेक्टली 0.08 बुक करेंगे। कब बुक करेंगे, 31 जैन को। नेक्स्ट ईयर में बेटा एक्चुअली प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होना चाहिए था थोड़ा 31 दिसंबर को, बट एज वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन 31st ऑफ दिसंबर, सो वी आर नॉट गोइंग टू बुक एनी प्रॉफिट और लॉस। एक्चुअली यू शुड रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन 31st दिसंबर, बट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फॉर फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट इज गिवन, बट स्पॉट रेट इज ऑफ नो यूज। विच रेट इज इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड रेट ऑफ 2 months। इजी और डिफिकल्ट, इजी और डिफिकल्ट, मस्त था ना एकदम स्पेकुलेशन। यस बेटा, इजी और डिफिकल्ट यार, बहुत जान लगा के बताया। आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम बेटा, बहुत सिंसियरली आई एक्सप्लेन इट, what is the difference between forward rate and spot rate. It's very difficult concept, but I tried to make it very simple, so at least appreciate करो यार।
यस सर, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड थोड़ा तो बताओ। नितिन शुक्ला बोल रहे डिफिकल्ट था सर, बट नाउ यू मेड इट वेरी सिंपल। बाकी स्टूडेंट्स बेटा ये हाउ टू, यस गिव मी द आंसर, हाउ टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। यस गिव मी सिंपल आंसर सो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको समझा या नहीं समझा। हाउ टू कैंसल एनी कॉन्ट्रैक्ट? यस टेल मी हाउ टू कैंसल एनी कॉन्ट्रैक्ट। हाउ टू कैंसल एनी कॉन्ट्रैक्ट? चलो इतना भी बता दो तो भी आई विल बी हैप्पी। अरे वाह, हिमांशु ने बता दिया आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट इमीडिएटली। संस्करण प्लीज बताओ, तनीषा बता बेटा, फटाफट बता। हाउ यू आर गोइंग टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा, सर्च में। यस हिमांशु का आंसर सही है। अरे वाह संस्करण जी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। लोगा सुंदर जी मस्त बेटा, एकदम बढ़िया। यस भूमिका मस्त बेटा, भूमिका हुशार छे। बेटा नितिन आंसर स्पेलिंग बेटा, सेलिंग का स्पेलिंग। नितिन क्या होने वाला है बेटा? यस गुडरी जी, यस यू आर करेक्ट। चलो 5-1 लोगों ने आंसर दिए, बस बाकी लोगों ने आंसर देने की इच्छा भी नहीं करते। सो ये बोलना ही नहीं है, इसलिए यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एग्जाम्स। चलो ठीक है, जाने दो। दर्शन ने आंसर दिया, ईशान ने आंसर दिया बाय एंटरिंग इनटू अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। यस वेरी गुड। दर्शन व्हाई यू आर पासिंग एंट्री? नो नीड टू पास एंट्री। 0.08 you are going to book it on 31st of Jan. Last question, illustration 8. अभी तो AS10 पॉसिबल ही नहीं है because this question was very difficult one. Speculation. बेटा Tanisha, by entering into new contract, but which contract? If buy is there, then you have to enter into sale contract. If sale is there, you have to enter into buy contract. बेटा मैं yes very good. Illustration 8. A Limited purchase of fixed asset costing 3000 lakhs on 1st January 2001. तो 3000 lakhs का स्ट्रेटेजी है, ये क्या है, लैक्स की एसेट है एंड द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय डॉलर। अभी उस दिन का रेट कितना था एनुअल इंस्टॉलमेंट? अभी बेटा ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। 1st January rate is 40, so you bought $75 lakhs dollars. You bought asset for 75 lakhs का dollars and 75 lakhs, and then बेटा rate is change from 40 to 42.5, मतलब 2.5 से difference हुआ. You are going to book your asset at 3000 lakhs, but that is $75. But now after that $75 into 2.5, मतलब asset is into $75, 187.5. And where to adjust the difference? In asset account. किधर difference adjust करना है? Yes. But para 46A अप्लाई किया तो बेटा उसमें आप लोग कैपिटलाइज भी कर सकते हो। आईसीए ने आंसर दिया है, यू कैन कैपिटलाइज इट। पैरा 46A फिक्स एसेट होगा तो डिप्रिसिएबल एसेट होगा तो फिक्स एसेट में ऐड करेंगे, एंड अदर देन दैट लोन लिया होगा अदर देन डिप्रिसिएबल एसेट तो एफसीएमआई टीडीए फॉरेन। यस बेटा देख लो एक बार एफसीएमआई टीडीए अकाउंट,
याद आया? इफ लॉन्ग टर्म लोन इज देयर, शॉर्ट टर्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन होगा तो यू प्लीज वॉच माय सेशन once again, you will get clarity over that S11 ka. And otherwise you can read your 100 pages ki book. In 100 pages book you have written loan in para 46A, you can read it, you will get the answer. ठीक है, आंसर कैसे लिखना है एक बार देख लो. एक मिनट. You want index? Asset to loan. You can record the answer in the such way. 1st January and 31st December 2.5 lakhs है. P&L भी allowed है if para 46A is not followed, and para 46A follow किया तो एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये कर दो. हाँ, yes, now you can take para 46A apply किया तो you will capitalize it. Yes, not mandatory, but beta it's always better na, otherwise it will be a huge loss. Yes, एकदम easy है. 9:20 हुए almost. Now we have only 10 minutes. चलिए. So here we have finished with the सबसे important क्या था? Speculation. Speculation and hedging are important. Hedging तो easy था. Hedging में just you will book spot rate and forward rate on the date of transaction and divide it over the period. तो वो तो easy था, but ये थोड़ा सा speculation टेढ़ा था. It's not very easy. Speculation में mark to market, then enter into cancellation contract. तो थोड़ा सा tricky था. Okay. चलिए. एग्जाम टिप्स. डिवाइड यूर पोर्शन बेटा. एस, ये तो आपको पता ही है. बिग टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा वेटेज इज 20 मार्क्स. बिग टॉपिक्स ब्रांच अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट इज बेटा ब्रांच हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. सो ऑलमोस्ट वेटेज इज ऑफ 30 मार्क्स एंड रिमेनिंग टॉपिक्स बेटा वेटेज इज 50 मार्क्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अच्छा, इंडेक्स का आपने नहीं लिया ना, लास्ट में बता देता हूँ. एस बेटा एग्जाम टिप्स बोलता हूँ. फर्स्ट, मेंटेन 100 पेजेस की बुक थी. मेंटेन 100 पेजेस की बुक जो हमने मेंटेन की है, रेगुलरली रीड करो. गुरु मंत्र देने वाला हूं, डोंट वरी. आज से गुरु मंत्र शुरू होंगे बिकॉज एग्जाम वाज गोइंग ऑन, तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस किया था. फ्रॉम टुडे यू विल गेट गुरु मंत्र ऑन अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, बोथ पे मिलेगा. इवन इन द नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट फ्रॉम द एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स तो मैं अच्छे से आपके करवा के दे सकता हूँ. सो गुरु मंत्र वो चालू रखेंगे. यस, नाउ while you doing accounting standards, try to understand, जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हो तो डोंट रीड ओनली इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. आई विल प्रोवाइड यू लिस्ट फॉर फाइनल अकाउंट्स के भी. फाइनल के भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेरे पास पास्ट क्वेश्चंस है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. सो वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी. टेलीग्राम पे ग्रुप पे या इवन आई विल अपलोड इट ऑन दी आवर, जो भी क्वेश्चंस है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करके लिस्ट अपडेट कर दूंगा फाइनल के. सर वी डेंट गेट टाइम फॉर फाइनल क्वेश्चंस, तो बेटा थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर्स सी. माय
recorded lectures is of almost 150 hours. कितने hours है? 150. Okay, plus 150 आवर्स के लेक्चर्स टोटल हो सकते हैं, तो 150 आवर्स मतलब आपको ध्यान में आया. एंड हियर वी आर गेटिंग 45 डेज इनटू 2.5 आवर्स, उसमें से 2 आवर्स ही पकड़ो, इफेक्टिव 2 आवर्स, तो वी आर गेटिंग 90 आवर्स. तो रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव सेशंस में बेटा ऑलमोस्ट 60 आवर्स का डिफरेंस है. तो 60 आवर्स इज अ बिग डिफरेंस बेटा. 60 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट 25 डेज. ओके, सो 25 डेज का बेटा सेशन का डिफरेंस है. So definitely daily basis पे 1.5 hour and 2.5 hours after 2 days in a week. तो बेटा ये तो बेटा difference होने वाला है. Now cash flow yesterday we have done it for 4 hours. Morning 7 o'clock to 12 o'clock. बीच में 1 घंटे का break था for self solving. So it takes a difference. Yes, you can't have बेटा all these systems. तो हमारा recorded system versus manual system में थोड़ा तो फर्क आएगा. ओके, देन आई टेक नॉर्मली रिविजन. इधर कैसा होता है, रिविजन को टाइम नहीं मिलता. ओके, और आईसीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो कितना एक्सपेक्ट करोगे. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आईसीएफ नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर डूइंग योर लाइव लेक्चर्स. तो लाइव लेक्चर्स में जितना होता है, ऑल फैकल्टीज हैव बेटर लिमिटेशंस. सो आई एम नॉट टेलिंग कि इतना पॉसिबल है, बट वी आर शोइंग प्रॉपर वे हाउ टू स्टडी इन दिस वर्चुअल बैचेस, लाइव बैचेस. लाइव बैचेस की कॉस्ट भी बहुत है आईसीआई को. यू कैन थिंक ऑन दिस कि आईसीआई इतना सारा लाइव बैचेस को कितना सारा ऑल ओवर इंडिया में आपको you have to provide this facility. So we have a strong team, backup team है, though it is free of cost on available on YouTube, but ultimately your comments on YouTube पे बेटा live comments, ये सब chatting करना, it's very बेटा costly system. It's not very cheaper system के ऐसा हम लोग YouTube पे lecture दे दिए, इसको cost है. Okay, so ICAI is giving you guidance. It's not expected कि we will provide you each and everything. तो ये नहीं होगा. अभी इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वेरी सिंपल कि इफ यू वांट डिटेल मींस 50 मार्क्स तक तो मैं पहुंचा दिया, बट डिटेल में और कुछ चाहिए तो गो विथ रिकॉर्डेड वन. तो ये आपको फायदा कर देगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, नो डाउट इन दैट. माय रिकॉर्डेड लेक्चर इट्स वेरी चीप कॉस्ट बेटा. वो सिर्फ ब्रांच थ्रू हम लोग रन करते हैं, हम लोग ब्रांचेस थ्रू रन करते हैं. तो आईसीआई की जो फीस है, तो ब्रांच हैज आल्सो ओन कॉस्ट. तो ब्रांचेस बेटा इतना नहीं ये कर सकते, तो वी आर प्रोवाइडिंग एट वेरी नॉर्मल कॉस्ट 2000 रुपीज वगैरह. बाहर प्राइवेट क्लासेस फीस दे आर ऑलमोस्ट मोर देन 10,000. गुड फीस, गुड क्लासेस. ऐसा तो बहुत सारे जो फ्री लेते हैं, बट बेटा द क्वालिटी लेवल. ओके, सो वो छोड़ दीजिए. सो इसमें तो ये तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते. फाइनल के क्वेश्चंस, यस आई एम गोइंग टू पुट इट, डोंट वरी. अभी बिग टॉपिक्स मींस कौन से कैश फ्लो, branch, incomplete records. These two topics are very important to clear your basics, accrual versus cash. Whenever you will get time, whenever you want to improve your basics, solve cash flow problem and incomplete records. Remember that pro forma, debtors, creditors, then expenses, income, always. बेटा अभी क्या होगा, now you will not be consistent. After that, accounts के teacher रोज तो आने वाले नहीं है. So you are going to forget everything after 10-15 days. If you have maintained it properly, your regular books, still time is there. If you decided now it's a time, whether should I go for both groups, whether should I go for one group, if you are mentally fit, yes, then बेटा mentally fit मतलब आपको कोई भी challenge आया तो भी you can accept it. So you go for both groups. If you have not done your strategies properly, you have not maintained your books 100 pages का, फिर 150 वो properly you have not solved it, तो बेटा फिर आप लोग एक ही ग्रुप दीजिए. I am not against बेटा both groups, but you have to decide your limitations. You have to decide your strong points. Okay, you know your SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats. You already know this. So sir, should I go for one group, both group? You can go बेटा one group full and 50%. If you like theory, you will go with the audit and EISSM. But बेटा all papers are mandatory. Yeah? Exam में attend पूरा करना है. You go for only exemption. Okay, you go only for exemption up to this November.
आफ्टर नवंबर बेटा नाउ यू नो ऑलरेडी एमसीए अनाउंस्ड, ये हमने कर दिया है. सो नाउ बेटा बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग्स भी चलेगी थोड़े दिन के बाद. यस, यू विल गेट द सिलेबस, बोर्ड का भी प्रॉपर सिलेबस भी आ जाएगा, वेदर 6 सब्जेक्ट्स आर देयर और क्या क्या हो सकता है. ऑल चेंजेस विल बी देयर एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम May 2024. 6 subjects है. But till that time, if you think nahi sir, I want to clear my exam in November, I don't want to wait till May, तो बेटा आप लोग May का वेट भी मत कीजिए. You go with this first group, नहीं both groups, those students. And those who are बेटा waiting for some time, तो आपको थोड़ा सा exemption भी मिल जाएगा. You go with the first group and then think for May 2024 में you can switch it to second group. बेटा वहां पे easy हो जाएगा second group. EISSM चला जाएगा, FM will be there. माइट बी कॉस्टिंग उधर है या इधर है, अभी थोड़ा सा डिस्कशन आपको भी पता है. इट इज ऑन वेरी प्राइमरी बेसिस पे चल रहा है. तो बोर्ड ऑफ स्टडीज से और कौन सी भी अफवाह पे यस वेट मत कीजिए, कोई भी अफवाह पे नहीं. यू थिंक ओनली फॉर यूर नवंबर एग्जाम. मे तक डोंट थिंक कि मैं नए कोर्स में जाऊंगा. सो प्लीज डोंट वेट टिल मे एग्जाम. यूर 6 months मीन्स ऑलमोस्ट 30,000 rupees on an average, I will tell you, because you are, if you are a fresher, you will get only 30 to 50,000 rupees. Fresher है normal firms. हाँ, यदि कंपनीज में जाते हो तो you'll get a good amount, but 6 months means you opportunity is 1,80,000, you lost it. Okay, so don't think for बेटा May month, think for November. जो भी है उससे चलते रहो. Then big topics, what is the strategy for big topics? Whenever you want to improve your basics in 10-15 days, solve 1, 2, 3, 4 questions on of cash flow and incomplete records. Small topics you solve not only study material question but also scanner question. Scanner question, I will put it all scanner questions on my channel. So मेरे channel पे मैं सब रख दूंगा all past year examination questions. If you don't want to see my channel, तो आप लोग किस में देख लेना बेटा, ये आपको देखना है बैच नंबर 6 में. Batch number 6 में we solve scanner questions. We got sufficient time for scanner questions, and batch number 5 और 7 में I have covered study material questions. So आपके batch के study material questions मैंने cover किए हैं. You go with the small topics जो होंगे उसके scanner question में either batch 6 और you go for हिंदी में चाहिए रहेगा तो मेरे channel पे देख लेना. Okay, so ये दोनों चीजें याद रखो. But continuous better revisions. For suppose you have started in this week, you decide your targets. Redemption of preferences 1 hour. If your concepts are clear, 1 hour daily accounts को देना है. 1 hour daily accounts को देना है. Solve any question, at least orally solve कीजिए. फिर 2 questions you do it in the writing, 4 questions orally. But daily basis पे ये करना. इन्वेस्टमेंट चैप्टर होगा. एंड वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर दिस बेटर स्टडी, यू फर्स्ट डिसाइड कि आपको रिकॉल कितना हो रहा है. डू रिविजन ऑफ लास्ट 2-3 चैप्टर्स. whenever you are sitting, चलो अभी AS11 है, AS11 में मुझे क्या याद आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है. हो सकता है कि you are बेटा you are understanding only 0, you understood it but you are recalling only 0 बेटा, nothing you are recalling. Okay, so फिर क्या करना है, open your 100 pages book. Then you will understand, हाँ AS11 effects of changes in foreign exchange rate. सर ने बोला था this is accounting standard. Then क्या हुआ, accounting standard में सर ने इसको बोला था this standard is divided in 3 part. Number 1 foreign currency transaction. फिर देखा था second one is foreign operation. फिर देखा था forward transactions. Forward में क्या देखा था, forward में hedging and speculation. Foreign currency transaction में para 46A is applicable होगा तो difference will be capitalized, and otherwise normal questions में difference is transferred to P&L. Why there is a difference? Because rate is different on date of transaction, rate is different on date of balance sheet, and rate is different on date of settlement. Now I remember all these things. So beta, this is how you have to revise your all questions. First recall your concepts, then recall. Beta, maintenance of your short book is very important, not only for my subject, it is also for costing, it is also for taxation, and even it is also for your law. So whichever rattamar points are there, whichever by heart points in there in law, maintain it properly. If you don't think for your 1 month before exam, you are not going to survive in this market. ओके, एक महीना. एंड देन क्या होता है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट वेरी लास्ट मंथ में, दे आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली कि यार अकाउंट्स ना संकेत सर ने अच्छा बताया था, सो आई डोंट हैव टू रिवाइज इट. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, so this is the problem. Last month mein you focus on that subjects which are your strength, don't focus on that subject which are your weaknesses. Strength को और strong बनाओ. This is the point.
of last month. Normally, I have seen students account starting में जोश, afterward blank, last month be blank. Why? Because they are not better doing it properly in the last month. They have not maintained this. Yes, in these 2 to 3 months, you do only one thing: maintain your last day revision book and index properly. इंडेक्स को अच्छे से बनाओ तो ही कुछ हो सकता है. और ये जो है ना, ठीक है, 2 पॉइंट्स कम पढ़ो, डोंट रीड 2 पॉइंट्स, बट बेटा फर्स्ट complete your last day revision notes. It's very important. And if you are consistent, if you think, yes, I have to pass in these 6 months, and you are consistently doing hard work, you are not going to fail. Sir, सब बोलते हैं sir, consistency, but after 3-4 days we can't concentrate. So beta, this is the difference between passing and non-pass students. Difference is of only 20%. 20% students are consistent, 80%. See, I have session from last 1 month. I am taking daily 2 hours ka session consistently. Whether I have given you any holiday? No. So ICI के lectures ये क्यों strong है? Because they are very consistent. 2.5 hours consistently करेंगे तो I will get money. I know that कि आज मैं गया नहीं तो मेरा loss होने वाला है. Okay, so I have to be consistent if I want to earn something. So similarly, you want to pass, so you have to better do consistently these homeworks, this 6 months का स्टडी. हम लोग सब लोग क्यों कर रहे हैं? यस, ऐसा है क्या घर पे बैठ के मुझे सपोज चलो महीने का 5 लाख रुपया आ रहा है, शुड आई डू दिस थिंग्स? और रोज क्या यार, सुबह 7 बजे उठ के वही घिसा पेटा स्केड्यूल, शाम दोपहर को बच्चों को लेके रिवीजन बैचेस लो, शायद दोपहर को 11 से 2 के बीच में ऑफिस देखो, फिर से ऑफिस देखने के बाद शाम को आओ, शाम को आने के बाद भी वापस से बैच लो, जूम पे बैच लेनी है, वो तो लाइव सेशन, तो ऑनलाइन में मैं भी बोर हो जाता हूँ, पर कंसिस्टेंटली करना ही पड़ता है. ओके, रोज नहीं किया, चल हफ्ते में से एक आध दिन मैंने छुट्टी भी लिया, इट्स ओके, बट 5 days आई हैव टू वर्क. Why? Because I want to see for my future. Similarly, your only 6 months are important, and if you are not giving your 100%, एक attempt चला गया ना, first attempt is always best attempt. Remember, after first attempt ना, your approach will change for your study. See, first attempt में एक डर रहता है, फिर क्या होता है, attempt आया गया, attempt आया गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. And see the difference. Here you are getting proper 7 months for study. After first attempt, you will get only 2 months. 2 months में आपको you will decide afterwards कि I will go only for one group. It's not possible. Second group का कुछ याद नहीं है. After first group, you will give knowledge to other students. है ना, ऐसा study करना. हाँ, you do in this way. I have done this mistake. Then you will become Gyani Baba. But in first attempt, you will at least follow all these strategies. कि sir क्या बोल रहे, sir क्या बता रहे. Second attempt में you won't follow me. This is a challenge. Okay. Why? And after first attempt, and if you get clear na, you will give beta all blessings to me कि संकेत सर के वजह से पास हुआ. And after first attempt, if you get flunk, यार ये बंदे के वजह से फेल हुआ. So both मेरे ऊपर आएगा. Doing good things is also with संकेत सर. Doing bad things, yes, संकेत सर को एग्जाम देंगे. तो बेटा ये नहीं बोलेगा कि yes, I haven't studied properly. संकेत सर first day से he told us कि maintain it properly, do the practice, use टिक-टिक-इजी technique. सर ने सब solve करके दिखाया, पर फिर भी मैंने casual approach में लिया. I met my friends, I was on the social media. You don't say these things in after result. You will blame others. और ये blame game है ना, that will you have to stop. Okay, I have not done the proper study, that's why I got flung. और बेटा I haven't used that technique. मैंने जस्ट सबको बोलते थे तो नहीं करता था, और ये सब चीजें ना ये बाद में रुलाती है. So it's better कि do it now, don't waste your one attempt. So ये आज मुझे करना है और complete करना है. Sir, already I am telling you, small topics will take maximum 2 days to complete it. For example, bonus sir, Guru mantras are there. सब कुछ दिया हुआ है. स्कैनर क्वेश्चंस आई विल अपलोड. और क्या करूं मैं, ऑलरेडी नोट्स आर इन द सिंपल वे, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, 100 पेजेस की बुक रेडी है, एंट्रीज रेडी है, खाना है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है. एंड स्टिल इफ आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग्स तो कैसे होगा सर? आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड. दिस इज द लास्ट डे विथ यू बेटा फॉर इंटरेक्शन. आई डोंट नो अबाउट सेकंड ग्रुप. कि सेकंड ग्रुप में 2-4 टॉपिक्स आ गए तो आई विल बी देयर, नहीं आए तो बेटा ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए. सो ये हो सकता है. नाउ योर रिक्वेस्ट के हिसाब से होगा, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मिलेगा नहीं मिलेगा. इट्स ऑलमोस्ट बेटा मुझे भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना कि इनको ही सब कुछ देना है करके. योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल, नो डाउट इन दैट. बट सपोज नहीं भी रहूंगा तो
बी इन कॉन्टैक्ट, आई विल गिव यू गाइडेंस। हम लोग कुछ ना कुछ करके, टेलीग्राम चैनल पे भी है, इधर उधर से भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा ही, सो डोंट वरी। तो गाइडेंस के लिए नो डाउट वी विल बी इन योर टच, बट प्रॉब्लम इज दैट इफ यू एनी क्वेरी यू कैन बोर्ड ऑफ स्टडीज को मेल करो, तो वो लोग भी बेटा फर्स्ट थिंग, हमारी फैकल्टीज भी जो है जो स्टडी मटेरियल लिखते हैं वो लोगों को भी रिस्पॉन्स देना रहता है। यू कैन मेल टू देम, अदरवाइज यू डोंट वांट टू मेल टू देम कि मेरा क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी आंसर दे देंगे। इफ दे आर नॉट गिविंग आंसर्स, आई विल गेट टाइम, तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। बट यू कंटिन्यूअसली यू अपलोड योर स्केड्यूल डे टू डे बेसिस पे, एंड स्टूडेंट्स हियर मेक मिस्टेक। सी रिमेंबर दैट पार्थ जो शाह है, उसका डेली स्केड्यूल मुझे आता था कि मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठा हूं और इवनिंग में कितने बजे सोया हूं, कितने ग्रुप्स का मैंने कैसे स्टडी किया, डेली स्केड्यूल he used to send me, and he get cleared in the first attempt. Is but he started 2 months late than other students, but still he get cleared and he got the rank. तो यस बेटा, ही गॉट क्लियर एंड ही गॉट द रैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे ये करना है, इतना याद रखो, एंड डू दिस रेगुलरली। सेंड मी स्केड्यूल, टेलीग्राम चैनल पे रहो मेरे साथ, या गुरु मंत्र सीरीज होंगी, या जो देखते रहो ये सभी चीजें, प्रॉपर स्टडी करो, वापस से यू कैन वॉच दी सेशंस वंस अगेन फॉर गेटिंग मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एंड बेटा 2.5 आवर्स के सेशन है, वेरी सिंपल सेशंस, डिटेल में चाहिए होगा रिकॉर्डेड ले लो, कुछ भी करो पर स्टडी करते रहो। थैंक यू, एंड वी विल मीट ऑन, कब मिलेंगे अभी, संडे। ओके, संडे का स्केड्यूल आ जाएगा, आई विल रिक्वेस्ट टू बोर्ड ऑफ स्टडीज को। एंड आई वाज वेरी बेटा नर्वस कि आज के सेशन स्टार्ट होने के पहले, बिकॉज आई डिडंट नो कि वेदर आई विल फिनिश द सिलेबस और नॉट, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, ओनली वन पार्ट इज रिमेनिंग, दैट आई विल कवर इट, अदर फैकल्टी विल टीच यू प्रॉपरली फॉर अदर 2 टॉपिक्स, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो मैं हुई टेलीग्राम पे, डोंट वरी, ही विल टीच यू प्रॉपरली, सो सब कुछ हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू वन मोर टाइम, आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ मेरी बैच कंप्लीट हो गई, सो विल मीट, डोंट वरी। चलो, थैंक यू।